ये जो बोलिए पार्टिसिपेंट तो जो है हमें घड़ी में ये 100 पार्टिसिपेंट दिया था बच्चा इतनी जगह ही कौन मेरे ये रखे में तो एक कौन है नीला छोकरी गई है मायरा मानो ऐसा ऐसा भी दे ऐसा और तो कौन जाने Mic. आपके लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? मेरे लैपटॉप हाँ नहीं लेके आया। रूम पे आपके? हाँ अच्छा चाहिए? नहीं बस ये ले रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम Abdurrahman Saab. I think before start we can test the voice if we are listening to me. Engineer Abdurrahman from PC. Are you online with us? Engineer Abdurrahman or Nasir from PC. Can the rest of the people in the conference can listen to me? Yes, sir. Yes. The voice is clear. Yes, unfortunately, Yes, sir. sometimes the internet in Gilgit is not very stable, but I believe today it's good. So sometimes we have some voice problems periodically, but not. So, Abdurrahman, are you here? Just to start with. So, mashallah, we have a good number of people. Yes, housekeeping. First of all, I welcome you all. And my request to all of you will be please mute yourself and preferably also close your cams because you see that a lot of bandwidth is taken by the video streaming. Certainly, if you have any question, you can raise the hand. We will take up the questions when we are in the question answer session. But I'm happy that we have almost 150 plus people.
online, which shows the enthusiasm of engineers. For a senior engineer like me, who is Vice Chancellor now in the Karakoram International University, is really a very good opportunity to interact with such a big number of engineers, mostly young engineers. So welcome you all. I think it will be not very easy to introduce each and every person, but I certainly can see your names, like just to quickly, we have Ali Hassan, Mohsin Tawqir, Shayan, Asif, Saad Ibrahim. There is a friend from Hawaii, mate, I don't know what his name. Hassan Saeed, Rizwan Kamal, Muhammad Talha, Janzeb Masood, Usama Zaid, Iman Das, sir, welcome. Ghulam Hussain, Ibrar Hussain. Then there is some Muhammad something, Muhammad Latif, Shamsur Rahman. Another friend is connecting. Shao Jin, I don't know whether it's a Chinese name or. So there are a lot of names which are not the direct names, but certainly I would request you all to be very friendly. Certainly it's not a lecture, typical lecture, rather it's a interaction between engineers. And first of all, I welcome you all to this 2 hours lecture series, which has been arranged particularly by the PC in the wake of COVID-19. As you know, that the physical distancing has pushed us to avoid the face-to-face contacts. But certainly, just to give you a background, that I did my engineering from UT Peshawar back in 1988, and I was a gold medalist, and then initially started my career with NASPAC and then CNW department for almost 10 years. Then I switched over to university, Karakoram University, and I was there for, kindly mute your mic so that you are not distorted. Yes, thank you. Even if you are connecting, try to mute first so that we can be comfortable in talking to each other. For CNW, I worked mainly as an SDO, worked mostly in the building and roads, and then I joined Allama Iqbal Open University as Director Planning and Projects, worked there for almost 15 years. But in the meanwhile, I did my PhD, my MS from UT Peshawar, PhD from Texla. My main work was in high-strength concrete. And then I partly switched over to academia. And in the meanwhile, I did MS in economics, MS in environment, and MS in management also beside engineering. And then for some time, switched to faculty. And in 2014, I was appointed as Vice Chancellor City University Peshawar, where I worked for almost 4 years. And then in 2018, the President of Pakistan appointed me as Vice Chancellor Karakoram National University, which is a federal university. And Alhamdulillah, I'm working here for almost 2+ years now. So welcome you all. And since we have a bigger class here, so we will not be able to introduce each and every person, but certainly if you have questions, we will try to have some time for the last 15 or half an hour. I would request again to all the colleagues and friends that please mute your mic, and if you have problem with device, also close your cams so that you can have a better voice quality. Certainly, when you want to ask a question, you may open your cam so that we can see each other. Because the more cam are open, the more bandwidth is exhausted by the video streaming, and we have a voice fluctuation most of the time. So this is general SOP of the class, that
if you have any question, you just raise your hand. There is a in the box, I think there is a you can raise the hand, or you can just open your mic. Muhammad Zubair Saab, would you please close your cam? And Atif Saab and Muhammad Bilal Saab and Arifullah Saab and yes, no. why made 10 light? I don't नहीं know what is your name. And I would request the host, because I'm not the host, the host from PC is requested to please mute and put up the cams of the participants so that we have a clear voice. There is distortion from some people. Niyaz Saab from PC, are you with us? Who is coordinating from PC? Rahman, are you with us? सर मैं आपके साथ ही हूँ, मैं इधर ही हूँ. Kindly request the admin that if some cam our mic is not muted, please mute it, because it will create distortion for the rest of the class. Okay sir जी, मैं कर देता हूँ आपको पोस्ट आपके हाथ मैं कर देता हूँ. जो Zoom पे पहली दफा आ रहे शायद उनको ज्यादा पता भी ना हो, लेकिन ये है कि normally the protocols are that you have to keep both the mic and cam mute off so that distortion is not created. Sir, okay. Sir, एक मिनट मुझे दे दें. Dear participant, Dr. Atawallah Shah साहब, वाइस चांसलर KIU, वो कह रहे हैं कि अपने सारे माइक म्यूट कर ले. साइड पे ये माइक का वो एक तस्वीर बना हुआ है, उसको म्यूट कर ले ताकि आप लोगों को आवाज सही आ जाए और डिस्ट्रैक्शन ना हो. बीच में बड़ी शोर आ रही है ना, तो आप केयरफुली इसको सुन ले. डॉक्टर साहब बार बार यही अंग्रेजी में कह रहे हैं कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर दे, काइंडली म्यूट कर दे. मैं डॉक्टर साहब को को होस्ट बना रहा हूँ, फिर वो जो भी रेस हैंड करेगा उसको ओपन करेगा उसका. आप लोग काइंडली प्लीज अपने माइक बंद कर दे. सर जी प्लीज. थैंक यू. Thank you very much. I think it should be very friendly. To be very frank, you feel as if I'm one of you, a bit older, maybe 20 or 30 years older. But I see the faces of people around. And Zubair Saab, would you please mute? Dr. Saab, I would request you to become host and mute yourself, because I don't know, the admin has not made me host. I think because otherwise I could have the option. But anyhow, let's hope that in a few seconds we will have the. Okay, thank you very much. I think Abdurrahman, if you have to say something, you can start. Otherwise, we can start the process or the lecture, formal lecture. Abdurrahman, unmute please. Unmute please. अपने आप को unmute करें. जी सर. मतलब आपने कुछ कहना है, कुछ इब्तिदाई आई वुड लाइक कि आप तिलावत से शुरू करें ताकि हम फिर एक फॉर्मल लेक्चर की तरफ जाएं. डॉक्टर अताउल्लाह शाह साहब. अच्छा, anyone from the participant please recite the few verses from the Holy Quran. नवीदुर रहमान साहब से गुजारिश है. Nayudur Rahman Sahab, if you are with us, please recite few verses from the seminar. Quran Sharif tilawat karo. Live. या फहद साहब है इस वक्त स्क्रीन पे. अपराध के इस्तेसाल को खत्म किया. ऐसे कई इनकलाबी इक़दामात किए गए जिन्हें अच्छा जी, कोई साहब जो है वो तिलावत शुरू नहीं, मैं खुद शुरू करता हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
قل هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون صدق الله العظيم. Jazakallah. In the name of Allah, who is the most merciful and mighty, whether those who know and don't know are equal, Sadaqallahu al-Azim. So God has very clearly said that those who don't know and those who know, though those who have the knowledge and wisdom are not equal to the people who are not having this. I'm one of the proud engineers who is leading the second university as Vice Chancellor. And I think for the engineering fraternity, it is also an honor. Maybe some of my students are also in line, and I could receive their emails last night that they were attempting to be part of this process. Rahman, there is distortion. Can the admin help us? Can the admin help us to mute the all the mics? ये वो कर सर जी, डॉक्टर साहब, रहमान साहब, सर जी आपको को होस्ट बना दिया है, आप वहां से सबके माइक म्यूट कर दें। नहीं, लेकिन 256 लोग तो एक वक्त में 272 लोग हैं ना। मेरी गुजारिश है अगर एडमन वहां से करे तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि वो सारे नजर आ रहे होंगे ना। 272 लोग। सर जी अभी वो कह रहे हैं कि मुझे मतलब 275 लोग हैं। आप सर म्यूट ऑल ऑप्शन यूज करें, म्यूट ऑल ऑप्शन आप यूज करें, वो यार आप इस तरह कर लेना, म्यूट ऑल ऑप्शन यूज करें। हम वैसे हम जूम भी यूज कर रहे हैं, गूगल मीट भी और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर यूजिंग ऑल द 4 टूल्स। एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ जी, सबको म्यूट कर दिया। अगर जिसको भी मतलब सकून हो गया, जिस सर जी क्वेश्चन की जरूरत हो वो रेस हैंड कर दे और आप उनका फिर माइक ऑन कर दे, ठीक है? If anybody has any question at any time, please just chat box में आप question करें, I will respond, no issue. But thank you, Rahman. Thank you, sir. Carry on. Okay, sir. Thank you very much. I think we can start with we have already recited the verses from Holy Quran, but my personal life experience, which I would like to share with you, is that I always regard engineering as a noble and highly scholastic profession. And when I compare my all other qualifications with engineering is a very top priority. And I always say that if I am born 100 times, I will be a civil engineer. So ये एक pride हमेशा मेरे दिल में है कि I'm proud to have the engineering is my basic training, which give you diversity, which gives you advancing your knowledge, which gives you flexibility, which gives you resilience to work in very difficult environment. And that is basically the trainings we have from the we will try to cover a couple of important things in today's lecture. And I would request that if somebody want to answer, they can write in the chat box, or if required can raise hand and unmute if he is given the podium. Today we will discuss the procurement process, some of the latest amendments in the PEPRA regulation 2004. And Engineer Khurram, do you want to ask question? You have raised hand or do you have clapping? You are just having appreciation, or unmute please. Sir, I am clapping. Okay, thank you. Okay. So I will just have the authority to close the video now. So I think it would be better to have, I have got the admin powers. The admin power is the most enjoyable part of being Vice Chancellor also.
So I will stop the videos to have Rahman. You will be on the video available because we may need your presence. Okay, so we will discuss today the procurement management, the contract administration, and the PEPRA regulations, and some of the major amendments which have been made in the PEPRA regulations. We will go through the PEPRA revised version 2020, which has been just approved. And fortunately, I was part of the review process. I have given a couple of good recommendations for the review. And thanks to PEPRA, that they understood that, and we had a very good document now. So starting from the basic definition that what we normally mean by the procurement, Abdurrahman, I'm sure that you are recording the video. Just have your head say yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. So that we can have later on uploaded on your channel and also on my YouTube. Just to mention, my YouTube is all these lectures, and not only these lectures, almost 20 plus lectures on the project managements are available on my personal YouTube channel. You just learning with Dr. Ataullah Shah. It's very simple that we are learning together. So learning together with Dr. Ataullah Shah is a YouTube channel. You subscribe, you will have very good information. My personal website, people call it a virtual university, www.drshah.weebly.com. I'll write just for your information, drshah.weebly.com. This is my personal website where you will see a lot of good and my YouTube channel is Learning with Dr. Ataullah, together with Dr. Ataullah Shah. My personal email is drshah965@gmail.com. You can contact me anytime for any kind of engineering advice you need. My cell phone is 0333-572-9809. This is also my WhatsApp, so you can have any query you need to have. If there is any issue, I can consult the other people. So starting from the procurement process or procurement cycle, we normally, as engineers, have a very high responsibility of procurement. And these procurements are normally in the form of products and services. So the process of acquisition of products and services is called products and services in the projects is called project procurement. So these can be tangible, like maybe some finished products, or maybe it be the form of construction of a building as a product, or it may be in the form of services like consultant services, design services, and we will discuss briefly about these services also. So the procurement management is the process of acquisition of products and services in the project. And I'll share with you, I think, now the... Okay, Abdurrahman, I think the presentation is uploaded. Sir. This is the very beautiful campus of Karakoram International University. Anyone who comes to Gilgit is always welcome to visit Karakoram University. One of the most beautiful campuses located. Rahman Saab has been many times here, and other friends from PC also. It's a wonderful place. You can visit anytime you like. You can see the background. The office where I'm sitting now is on the first floor in the first Edmund block, and then we have many other blocks. We have 3 sub-campuses at Hunza, Ghizar, and Chilas. And we have a university of about 6,500 students, 4 faculties,
Faculty of Engineering, Faculty of Natural Sciences, Social Sciences, Arts, and Life Sciences. So now 5, because I just created the engineering faculty also. Briefly about myself, I have just described that I'm basically an engineer, and I prefer to write engineer with my name always. This is also the instruction of PEC, that you should write the word engineer as a prefix to your name, whether you are a doctor or professor. So that's always engineer is my first start name. And in my card also, I always write engineer professor Dr. Ataul Lasha, because that is the first identity we have. Then the qualifications, 32 years now. I've published 5 books on high performance concrete, project management, disaster management, environmental and social management, plain engineering, economics. Currently, I'm authoring 3 books. One is very specific to GB, which is an Urdu book, Daricha Ilmu Irfan. And people have raised hands. I don't know, can they be given the podium why they are raising hand? Can the people who want to have the raise hand, do you have any question? Or you are clapping, I don't know. We can have the chat box. Yes, you can chat if you want to have some, because going to the raise hand every time would distort us. So I think it will be better that we take up the question later, and we first of all start with the basics of procurement. Project procurement, professional ethics, and academic quality assurance. And one book is on the name of Dalicha Ilm Irfan. My thoughts in the GB as a vice chancellor. 35 journal publications, it's now 40, and 75 conference publications. I'm associated with almost 10 plus institutions, one way or the other way, in the research, in the conferences. Currently, I'm taking about supervising 3 PhD and about 7 MS students, doing 2 research projects, one with British Academy and one with the HEC, and also teaching almost, interestingly, project management to the MS students, and leadership, and also economics. This is my interest to teach. So the acquisition of goods and services is normally the procurement, and the okay. I don't know. There is a message from someone. I don't know. Should I continue, Rahman? Should I continue, or you are responding to them? I will stop the videos so that we don't have the distortion. Too much distortion. सर कंटिन्यू रख ले, बस इसको कंटिन्यू रख ले, अगर नहीं चल रहा है तो बस कंटिन्यू रख ले। नहीं, वो ठीक है, वो चल रहा है। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेज हैंड कर रहे हैं, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं, मुझसे? आई डोंट नो, बिकॉज सो फार आई कुडंट। सर ये अपना वो लेक्चर कंटिन्यू कर ले, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी लेक्चर। अच्छा, ठीक है। सो आई एम म्यूटिंग द पीपल, आई एम क्लोजिंग देयर वीडियोस so that we can have a better communication with them. अब्दुर्रहमान, आप थोड़ा इनका वो बाकी चीजें करें, मैं एक 5 मिनट आपसे इजाजत लेता हूँ, just to have some
गेस्ट कुछ है उनको रुखसत करने, ठीक है? तो आप थोड़ा 5 मिनट अगर इनके जो क्वेरीज वगैरह है इनको आप जी सर। ओके पार्टिसिपेंट, डॉक्टर अताउल्लाह शाह साहब 2-3 मिनट के लिए उन्होंने ऑफ कर दिया है। काइंडली अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई चीज़ हो तो अदरवाइज मैं आप लोगों को CPD के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। CPD स्टैंड फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसका हमने एक ब्राउशर भी डेवलप किया है, आप सबको वो मैं शेयर भी कर दूंगा कोर्स के आखिर में, क्योंकि यहाँ पे जो EPE का एग्ज़ाम अभी करीब आ रहा है तो उसके लिए हमें 17 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, और 17 क्रेडिट पॉइंट कैसे हम करेंगे, गेन करेंगे, तो उसके लिए ये है कि हमारे एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल, और 5 साल के हम देते हैं 10 पॉइंट, और उसके बाद जो बाकी है 17 क्रेडिट पॉइंट, तो रिमेनिंग रह गए 7 पॉइंट। 7 पॉइंट जो क्रेडिट पॉइंट है वो उसको हम कैसे गेन करेंगे, वो हम इस तरह गेन करेंगे कि अगर किसी, इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, और कैटेगरी ए जो है उसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द PCHEC। उसके बाद कैटेगरी बी जो है, कैटेगरी बी में वर्क बेस्ड एक्सपीरियंस है, जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो तो उसको हम 10 पॉइंट देंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सी है। कैटेगरी सी है क्या चीज़, अगर आपके पास कोई मेंबरशिप हो रिकॉग्नाइज एसोसिएट प्रोफेशनल बॉडी वगैरह, जैसे कि IEP है, IEEE है, इंजीनियरिंग सोसाइटी है, वाशिंगटन अकॉर्ड वगैरह वगैरह, इस तरह हर मुल्क के अपने अपने इंजीनियरिंग बॉडीज़ होते हैं। अगर वो भी उसकी कोई रिकग्निशन हो या कोई मतलब सर्टिफिकेट वगैरह हो तो उसके अपने पॉइंट है। नेशनल का 1 पॉइंट है, इंटरनेशनल के 2 पॉइंट हम देते हैं। और ये लिमिटेड कैटेगरी, ये 2 क्रेडिट पॉइंट पर ईयर हम देते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है, इसमें सिर्फ साल में हम 2 ही कर सकते हैं। और अगर कोई पार्टिसिपेशन हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेशन इन सेमिनार, पार्टिसिपेशन इन लेक्चर, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह वगैरह, जैसे कि जिस कोर्स में आज हम बैठे हुए हैं इसका भी 0.5 का है, क्योंकि ये 4 घंटे से कम है। 4 घंटे तक कम से कम 4 घंटे के लिए हम 1 क्रेडिट पॉइंट देते हैं, और 4 घंटों से अगर कम हो तो उसका हम 1.5 देते हैं। तो इसमें ये एक्सक्यूज मी, अगर किसी के पास पर ईयर 2 सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं। अगर ये भी नहीं है तो इसके लिए हमने कैटेगरी डी। कैटेगरी डी क्या है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, उसकी भी लिमिट सिर्फ 2 पॉइंट है पर ईयर के। उसमें आते हैं इंडिविजुअल लेक्चर। अगर आपने कोई लेक्चर डिलीवर किया हो, उसकी कोई एविडेंस है आपके पास, उसकी कोई कंफर्मेशन लेटर है आपके पास आई हुई है एज ए रिसोर्स पर्सन, या कोई ईमेल आई हुई हो, तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज होती है। और इसको आपको 1.5 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है और इसको डिलीवर करना मतलब ये एक मुश्किल काम होता है, इसलिए हमारी मैनेजमेंट ने इनका 1.5 रखा हुआ है। सिंपोजियम पैनलिस्ट है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स इन जर्नल्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स। अगर किसी के पास किसी ने कोई पेपर रिसर्च वगैरह आर्टिकल या कोई जर्नल लिखी हुई हो और वो अप्रूव्ड हो और उसका लिंक उसके पास अवेलेबल हो तो उसका भी ये देंगे। हाँ, ये मुझे मैसेजेस में आते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये बाद में आपको मैं बता देता हूँ। अगर किसी
किसी ने कोई टेक्निकल रिपोर्ट लिखी हुई हो और उसको पब्लिश की गई हो तो उसका भी पॉइंट है, उसका नेशनल लेवल पे 1.5 है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको 3 पॉइंट। राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर है, ऑथरिंग बुक है अगर किसी ने किताब लिखी हो, पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविटीज सच एज इमरजेंसी वर्क, रिकॉग्नाइज सोशल वर्क। अगर किसी ने कोई सोशल वर्क की गई हो, मतलब किसी इदारे में कोई फ्लड आया हुआ हो, अपने इदारे की तरफ से उसको असाइनमेंट दिया गया है तो उसको असाइन किया गया हो और वहाँ पे गया हो, तकरीबन वो 2-3 दिन वहाँ पे रहा है,
Abdurrahman, I think you are listening to me. Okay, so the project procurement process, we have 5 or 6 very important steps. The procurement planning, which is the first and very important part, in which we try to plan the procurement of services and products for the entire project life cycle. And in the public sector, we normally use the cash plan and work plan. And this cash plan and work plan is basically based on the physical activities which we are supposed to execute on quarterly basis. And for each quarter, then we also estimate the cost which we will be incurring on the acquisition of these products and services. And this cash plan and work plan, which is developed on annual basis, then becomes the base for the future monitoring. So the project procurement planning is one of the most fundamental and neglected part of the procurement, because most of the time we randomly procure things. We don't have the plans with us, and what happens that normally something important things are not procured in time, and we construct the buildings, but we don't have the furniture. We construct the building, but we don't have the networks. We constructed the building, but we don't have the equipment in time to install, and all these together then leads to the project delays. So the procurement rules, public procurement rules decides that there must be a procurement planning on annual basis, and this procurement committee must be comprised by the senior people, at least a grade 19 officer, preferably having a procurement background, should have the convener or chairman of the procurement committee, and the experts from the finance and from the other departments like engineering must be part of this procurement committee. And this procurement committee, in fact, must have expertise from outside if required. मिसाल के तौर पे जब हम किसी IT की procurement करते हैं और जहाँ पे हम समझते हैं कि हमारी पर्सनल एक्सपर्टीज इतनी अच्छी नहीं है, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम बाहर से कोई एक्सपर्ट को बुलाए ताकि उनकी इनपुट्स जो है वो हमें मिल जाए. So the procurement planning is basically the requirements of the procurement process, and preferably it should be for the entire life cycle of the PC1 or project. But if you don't have enough planning, at least for every year you should have the procurement planning, and normally it is exhibited in the cash plan and work plan of the project. Just to have a quick comment from anybody who would like to say anything about the cash plan or work plan. You can raise your hand, and I think the admin can unmute you, or if I can unmute, Engineer Mia Muhammad sir. I don't know. Anyone who would like to comment on what is cash plan and what is work plan, and how do we prepare it? Six participants raise hands. Please unmute yourself if you want to talk. Anybody who would want to talk and discuss on the cash plan and work plan. I think, Rahman, I should continue if there is no comment.
सर कंटिन्यू कर ले सर. Okay, ठीक है. Because I'm a class teacher, so I normally want interaction from the students. Okay. Okay, dear engineers, the procurement planning, we also decide that whether we would like to work inside or in-house. Do we have the capacity, for example, for small procurement, you may have the internal experts available with you. हम छोटे जो काम है, मिसाल के तौर पे कोई कारपेंट्री का काम हो, कोई मैसनरी का काम हो, या इस तरह के जो काम है, we try to do it through our own internal labor, and we normally buy the material from outside, and we make them use those material for fabrication of the various components like some doors, windows, chokearts, and all these. Maybe some welding work. So the basic decision we normally take that whether we need to make or buy. For example, if we are hiring a machine, the decision that whether we would buy the machine or we would hire the machine or lease the machine for a certain period would depend on certainly the comparative assessment of the cost we can incur on the. So that's very important to have your analysis. So once this decision is done, we also plan that the kind of document which we will be used, which particular document of the Pakistan Engineering Council are the most appropriate for this kind of procurement, and then what will be the timeline for the procurement. So all these decisions are done, the timeline, the quantity, the use of appropriate PC bidding documents, the other important decisions like whether we would buy from the market or we would make inside. These are decisions are taken in the planning procurement process, and this is the most important part because this provides you the baseline for procurement for the projects. Once you do that, then you issue the tenders. There are different terms we are using. For example, we are using the tenders, we are using the bids, and we are using the proposals. Normally, all these terms mean that we want to invite the bids. These bids may be in the form of a tender and form of a proposal. For example, normally, for services like consultancy, design, asylum investigation, and all these things of projects, we normally go for requests for proposals, RFP. And for the goods or contracted works, we are using the term tenders, but the common word is normally used as bids. So bid normally include all the both kinds of tenders and requests for proposals, but certainly we can use these tender and bids simultaneously, and normally RFP are used for services. So we decide and then we issue the appropriate bidding documents. For any bidding document, please remember that there are 5 or 6 very important components. Please write it down. This is very important. And normally we put this question in the professional exams also. The first is the instruction to bidders, which is normally the first part. Then we have the condition to the contract. Then we have the specifications. The fourth one is bill of quantities. The fifth is your bid sheet, BID, SHIR bid statement. And then we have the templates of various annexures, like, for example, the different annexure documents we use for mobilization advance. We are using a PC approved agreement or advance guarantee
template, we have the bid security template, we have the secured advance templates, and all these templates are given as annexures to the contract agreement templates. So all these templates are given as annexures to the contract, and then we have the drawings and any other relevant information. So these are the 6 or 7 very important parts of the bid, typical bid. Now coming to the first part, that is the instruction to bidders, ITB or IBT or something like that. We are using normally there are various classes, and normally this part includes the general principle that how to collect the bid, what will be the bid price, how the bid will be submitted, what is the venue where the bid will be submitted, and general conditions, general instructions. The second part is conditions to the contract, in which we normally have 2 components. One is the general conditions, and the other one is particular conditions or special stipulations. Now the general conditions, remember, are based on the FEDEC contract. Please remember that all the bidding documents of PEC are based on FEDEC documents. And FEDEC stands for Federation, this is a French word, which means that Federation of International Developers and Consultants. And this is basically a statutory body, international statutory body, which is having an authority to develop the contracts for the development and consulting projects. So definitely the FEDEC contract document is basically the global document, or the global document which has been agreed by all the nations to be presented as international contract document, and the condition of the FEDEC, the general condition of the FEDEC, are basically part of the international law. So any dispute which would arise in international or national projects, for example, Bayender was a Turkish company which was working on the M1 project from Peshawar to Islamabad. And the contract was based on FEDEC because it was an international contract. And later on, when General Musharraf assumed the powers as the chief executive of the country, he closed the project. It remained suspended for almost 2 years without any reason on a technical grounds. So the Bayender was then ordered to close the project and expel leave the site. So this certainly created a dispute, which Bayender then took to the International Court of Justice. And finally, they won the project, and Pakistan has to pay something like 2 billion as a penalty for violation of the contract. So the general internationally accepted document is FEDEC document, and FEDEC document is basically used for general principles or general conditions. Now, the second part of the condition to the contract is special conditions, and normally these are the conditions which are specific to the projects. For example, if I am doing a project in Karakoram University now, for example, we are constructing the engineering faculty and we are constructing the hostel buildings. So there might be some special challenges, like we have a harsh weather. We have to do the concrete in maybe in cold weather, which is sometimes minus 10 degrees Celsius. And then we have some other issues which are quite particular to this part of the country. So in this condition, or in such condition, we may add the special conditions to the contract. But remember that the special condition to the contract should not jeopardize the general condition. कोई भी स्पेशल कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं डाल सकते जिसकी वजह से जो जनरल कंडीशन का स्पिरिट है वो आप डिस्ट्रॉय करें। मिसाल के तौर पे FEDEC ये कहता है कि अगर कोई कंट्रैक्टर का बिल वेरीफाई हो जाए और MB हो जाए और वेरीफाई हो जाए तो उसको 28 दिन के अंदर आप पेमेंट करेंगे और फाइनल बिल जो है वो 56 दिन के अंदर करेंगे।
अगर आपका बिल जब 28 दिन से ज्यादा डिले होगा तो उस सूरत में कंट्रैक्टर आपसे एडिशनल कंपनसेशन एट द रेट ऑफ किबर प्लस 2%, दैट इज कराची इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट, करंटली कोई 4-5% है, उस पे 2% प्लस करते हुए वो आपसे उस अमाउंट पे जो है कंपनसेशन लेने का इख्तियार रखता है और आप पाबंद है कि उसको इख्तियार ये दे दे। लिहाजा एक जनरल कंडीशन है जो एक इंटरनेशनल लॉ है। अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करेंगे तो लेबर विच इज लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट, और अगर आप पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में यू विल बी डूइंग द किबर कराची इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। सो अब अगर कोई जनरल पर्टिकुलर कंडीशन में इसको नलीफाई करता है या इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाता है कि एक ठेकेदार का जो बिल है वो हम कम से कम 56 दिन से पहले नहीं करेंगे, तो दिस विल क्रिएट एन एनॉमली एंड दिस स्पेशल स्टिपुलेशन विल नॉट स्टैंड if there is a contradiction between the general condition of FedEx. So the basic law is that you cannot change the general conditions of the FedEx because this is an approved international law. Or the document is an international document which has been ratified by all the countries. So we normally invite the tenders, invite the bids, and request for proposals. Within this, we give the criteria that what will be the evaluation criteria, how the bids will be evaluated. There are certain methods given by the PEPRA. We will discuss in the second part. And we also give the specifications, which are really very important part of the bid. And specifications are normally the standards which are acceptable for the products and services. Please remember, ladies and gentlemen, there is nothing like below specification to be accepted, because specification is the minimum acceptable criteria. This is the minimum acceptable criteria for any product or service we desire to procure. So please remember that if somebody says that this particular product is slightly below the specification or slightly not according to the standards, please reject that, because this is beyond the minimum requirement. This is below the minimum requirement of the project. So the specification for any product or service is basically the minimum required criteria or minimum required standards for acceptability of the project, products and services. So this is the third very important part, that we have specifications which relates to the different standards. For example, we use the American Concrete Institute standards for concrete works. We may be using the British standards. We are using the American Society of Testing Material, STM standards for different material like steel, metals. We may be using any other Pakistan quality standards if there are some standards which are not internationally available. So the specifications always refer to the general specific generic specification. It should never refer to the name of any product, because if you refer to the particular product, this becomes a kind of anomaly. It becomes a kind of favoritism. So the basic principle which have been established by the PEPRA is the specification should be generic, based on the standards, not based on the names. Anyhow, if you have any problem in which a sole and only one person is available for that very particular product, so you can bring the reasons on record and you can then quote that, but that should be the intellectual property of only one supplier or one producer, so that you can not invite any kind of monopolies. So okay, now going to the within the bidding document, we can have
things like then you have the bill of quantities, and normally the BOQ, you all remember, and you all are engineers, that you know that the bill of quantities include the description, the identification of the item, which is normally a unique number, and then we have the description, which is the comprehensive description of the item of work or item of supply, and then we have the unit, then we have the quantity, and then we have the rate and amount. In case you are asking for the rate, you may leave this these two columns blank, and if you are going for on a schedule rates which are above and below, then you can fill this rate and you can sum up the amount, and then you ask the contractor to quote their premium, for example, on 2017 schedule of rate or 2019, whatever latest schedule is available from CNW or PWD or whatever department you are working with, and the standard rates schedule of rate allowed by your department, you refer to that. So this bid can be invited maybe on an item rate basis or maybe on a schedule rate, in which you give the rate and then tell them to quote their premium above or below on the quoted prices. So once we are inviting the bids, there are certain requirements. There can be different types of invitation of bids, like single stage, single envelope, two stage, single stage, two envelope, two stage, two envelope, and direct contracting and petty purchases. So these are 5 types of bidding processes. You can write that the most common is single stage, single envelope, SSE, and the second is single stage two envelope, SETE, and the second is two stage two envelope, TSTE, and the one is direct contracting, and there is another is petty purchases or quotation work. We will discuss that later in the PEPRA rules. So based on the appropriate requirement of the bidding process, as per the advice and recommendation of the PEPRA as a law, you then select the appropriate procurement method, and then you invite the tenders. Please remember, this is the very important issue, and we receive a lot of anomalies in the Pakistan Engineering Council from different departments and clients, that any criteria, any evaluation criteria which you have given in the tender document cannot be changed once the bids are opened. So please remember that this is a law, and you cannot change the procurement, because this will make the whole tendering process invalid. So the bottom line is that the evaluation should be criteria should be given in a very appropriate manner, and it should be well thought process, so that at later stage you are not able to face any problem. Okay, so there was some messages, but I think these are not relevant. So the evaluation criteria which you normally give in the bidding document at the time of issuing the bidding document, it cannot be altered at later stage. Once the bid is opened, please remember, if there is any amendment required before the opening of bid, it should be not later than 1/3 of the time given for the opening of bid. For example, if you have given 21 days as a notice period, so any amendment cannot be allowed before 7 days, later than 7 days, because the bidder should have enough time to adjust his bid to any change you have made to the criteria or specification in the bid. So this is very important, that you have to be very careful in developing the evaluation criteria or selection criteria for the bid.
So you go for the source selection, the bid selection is for the approved criteria. Normally we have a tender opening and evaluation committees in the departments that may be comprised of the experts from different departments. And this evaluation committee normally evaluate the bids on the given standards and a given evaluation criteria. And after that, they see that whether the bids are responsive or whether the bids are acceptable or not. And then based on the criteria given in the tender documents or bid documents, then we select. It may be lowest cost based, it may be cost and quality based, it may be only quality based, it may be some fixed price contracts. So all these will later we discuss in the, so it may be to the T envelope, single envelope, and all these we will discuss later on. So once the most responsive or the most feasible contract is selected, our bid is selected, then we award the tenders and we award the contract, and this starts a relationship between the seller and buyers, the bidder and client. And this contract document again is a standard document which is based on the bidding contract document which we have already shared with the bidders, and that is basically the relationship between the a contract is basically agreement enforceable by law. That is the simple definition of contract is there's any agreement which is enforceable by law. We will discuss if we could get some time. And then we go to the, I'm just giving a brief detail of all these steps, and then we will skip, go to the next part. Once the contract is signed, we established a formal relationship as a buyer and seller, as a client and a bidder, a contractor or a department. And then we go for the contract administration, the various clauses like how the work will be started, how the site office will be established, how the billing will be done, how the work will be verified, well, to the frequency of billing per month or during a year, what will be the duration, how to decide about the bad works, how to correct the bad works, how to reject the bad works, and all these important, what will be the variation method, if there is any variation, if there is an addition or alteration. So all these things will be then defined and very clearly given in the contract document, and this contract document becomes a law for both sides to comply with. And once the project is completed successfully, and we have all the good things, and we could complete the project, a lot of problems may come up during the project, but certainly a good contract will always resolve these problems without any kind of litigation. If there is no serious litigations, normally we go by the spirit of the contract, and both sides are supposed to respect the spirit of the contract because it's a legal document. उसके बाद अगर project खत्म हो जाए successfully, तो फिर हम project को close करते हैं और project closure certificate issue करते हैं. पूरा document भी बन सकता है. अगर आप एक बड़ा project कर रहे हैं तो उस सूरत में मुमकिन है कि आपको closing में काफी अरसा भी लगे. It may take 1 or 2 years to close all the contract. For example, in the motorway project, there were more than 100 contracts in the M1, and certainly there were a lot of issues, litigations, and payments issue, delays, compensations, and all these together certainly led to a large number of litigations also. And in this case, certainly you may take very long time in closing the project, though the project is physically completed. But the legal closure or administrative closure process may take some time. So normally the contract closing office would remain for some time till all the contractual obligations, legal obligations, and the procurement and other contractual obligations are met. Abdurrahman, are you comfortable with my presentation?
सर ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल सर जी, बहुत सही जा रहा है, आवाज भी सही है, पिक्चर सब कुछ, प्रेजेंटेशन सही। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। और मैं वैसे 2-3 दिन बुखार था मुझे, बट आज टुडे आई गॉट एट 4:30 और मैंने कहा इंजीनियर कैन नेवर बी सिक। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, नमाज पढ़ी और मैंने वॉक शुरू की और मैंने कहा कि फॉरगेट अबाउट इलनेस, लेट अस डू सम गुड थिंग फॉर द नेशन। तो सुबह से मैं फिर काम पे लग गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर नाउ। दुआ करें गुड सर जी, मैं अल्लाह को है। काम हमारा यहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत हेक्टिक, सारे दौड़ना। यहाँ पे आप बड़ा एक पर्टिकुलर सिनारियो है, लिटिगेशंस भी, झगड़े भी, तो सारों के साथ हमें चलना होता है, बट जनरली पीपल आर गुड, दे आर रिस्पेक्टिंग वाइस चांसलर इन KIU। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियली क्लोज करते हैं, तो दिस इज द token of acceptability that both parties to the contract have fulfilled their obligations under the contract। कि जो बायर है या क्लाइंट है, वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि सेलर या बिडर या कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की है और उसका ये इस्तेहकाक है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके मुताबिक उसको पे किया जाए, उसका फाइनल पेमेंट रिलीज की जाए। क्लाइंट या सेलर बायर जो है वो इस चीज को अंडरटेक करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारियां हैं वो उसने पूरी की है और हमारा कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है या कोई क्लेम नहीं है कि उसका कोई काम खराब है। और हम एक उस वक्त जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं, फाइनल एक्सेप्टेंस, तो हम एक चेक लिस्ट इशू करते हैं और ये चेक लिस्ट जो है नॉर्मली उन तमाम छोटी छोटी गलतियों का है कि कहीं पेंट थोड़ा ख़राब है, कहीं पे एक टावर बोल्ट इज़ नॉट वर्किंग, कहीं आपका डोर क्लोजर काम नहीं कर रहा है, कहीं पे 2-4 टाइल्स गिरे हुए हैं। तो वो एक डिटेल चेक लिस्ट, इंजीनियरिंग चेक लिस्ट हम बनाते हैं और उसके बाद वो चेक लिस्ट उसको देते हैं, लेकिन अपनी फैसिलिटी उससे टेक ओवर करते हैं। याद रखिए कि इसका फाइनल पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मली पीपल से दैट ये बिल 1 साल बाद हुआ है तो डेट ऑफ टेकिंग ओवर जो है 1-2 साल नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी फैसिलिटी कंप्लीट की, फाइनल बिल अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसने सब्सटेंशियल कंप्लीट की, ऑपरेशनल हो गया आपकी बिल्डिंग, आपकी रोड, तो आप कानूनी तौर पे जब उसने आपको कहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैसिलिटी आप उससे टेक ओवर करें। जहाँ तक बिलिंग की बात है, मुमकिन है कि अभी गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज नहीं किए हो, एक अलग इशू है, उस पर जो है वो आपसे एडिशनल कंपनसेशन तो मांग सकता है, लेकिन इस बुनियाद पे आप उसका प्रोजेक्ट टेक ओवर डिले नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद आपका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड शुरू हो जाता है, नॉर्मली 1 साल का होता है और हमारा जो परफॉर्मेंस गारंटी है जो बॉन्ड की सूरत में होता है नॉर्मली AA रेटिंग, फेकरा रेटिंग के फॉर्म से, वहाँ पे फिर हम उस बॉन्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन पीरियड भी और इंश्योरेंस पीरियड भी या डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी जो 1 साल का होता है वो भी कवर होता है। और इसी तरह वो इंश्योरेंस हमारे पास रहता है और जब तक कि वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड वो पीरियड है कि जिसमें कोई भी अगर नुकसान हो जाए बिल्डिंग के अंदर, छोटे मोटे काम तो ऑलरेडी आपने बताए होंगे चेकलिस्ट की सूरत में, लेकिन ये कि उसके अंदर अगर कोई खुदा न करे कोई बड़ी कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई क्रैक आ जाए, कोई ऐसा इशू आ जाए, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि 1 साल के अंदर जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है DLP, उसके अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पीरियड में उसको रेक्टिफाई करे। उसके बाद जाहिर है आप उसको अपना जो है वो करते हैं। ये मैं ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी कम है, तो मैं ये आपको मैं फिर रहमान साहब को दे दूंगा, ये कल हम अपलोड कर लेंगे आपके वेबसाइट पे। ये वेरियस जस्ट टू
डिस्कस विद यू कि ट्रेडिशनली हम ये करते हैं कि पहले हम कंसल्टेंट को इंगेज करते हैं, उससे डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम बिड करके कॉन्ट्रैक्टर को से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उससे को। तो ये ट्रेडिशनल जिसको हम डिज़ाइन बिड बिल्ड कहते हैं, DBB, कि हम या टेंडर बिल्ड कि हम पहले और नॉर्मली दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन पाकिस्तान दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेज द सर्विस ऑफ कंसल्टेंट and then we design and we normally determine the detailed design, the tender documents and all the things are prepared by the consultant, and then we offer the open bidding or any procedure we are using. We solicit or invite the bids from the contractors. Modern जो इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है वो डिज़ाइन एंड बिल्ड है, जो पाकिस्तान में भी बहुत कम है, जिसमें नॉर्मली हमारे वापडा में कुछ प्रोजेक्ट्स जरूर हो रहे हैं जिसको हम EPC प्रोजेक्ट कहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें कॉन्सेप्ट से लेकर उसकी फिजिबिलिटी और फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइन और उसकी प्रोक्योरमेंट और उसकी कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें एक ही फर्म के पास होती है। और जो कंसोर्शियम नॉर्मली होता है, कुछ बड़ी फर्म का एक कंसोर्शियम होता है जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक भाषा डैम की बात कर ले तो यू वुड नीड एन EPC काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच डिजाइन एंड बिल्ड। सो नॉर्मली कई दफ़ा प्रोक्योरमेंट के बाद की जो कंस्ट्रक्शन के बाद कई दफ़ा उसमें मेंटेनेंस भी शामिल होता है कि जी कई दफ़ा उसमें ऑपरेशन भी शामिल होता है कि जी बनाने के बाद कंपनी जो बनाएगी उसको 10 साल के लिए ऑपरेट भी करेगी, उसकी मेंटेनेंस भी करेगी, बिकॉज द डिपार्टमेंट में नॉट है। तो आजकल जो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा इस पर काफ़ी, अगर आप मेरे नाम को ब्राउज करें डिज़ाइन एंड बिल्ड, इस पे काफ़ी आपको अच्छे यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड जो है publications which I have presented in various part of the world on in conferences and seminars. आपकी इजाजत हो अब्दुर्रहमान साहब, तो मैं साथ साथ चाय भी पीता हूँ, please don't mind. Apology. This may be the flexibility of having your own office. Sir, please. मेरा आज असल में मैंने आपसे किया ना कि I was feeling not well for last 3 days. I was having pressure. तो थोड़ा मेरा गला भी एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, तो गला भी थोड़ा थ्रोट भी इज नॉट क्लियरली ओके। So Abdurrahman, I would request it just to have a 5 minutes break. Can any good person, an experienced person, इनमें से अपने voluntarily थोड़ा अपना experience share कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, जिसको हम फ्लोर दे दे, ये जो अभी तक बातें हमने की है, ताकि थोड़ा सा मैं क्लास के साथ इंटरेक्ट भी करूं। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद एनीवन। चैट बॉक्स में अगर अपना नाम लिख ले तो उसको हम अनम्यूट कर लेंगे, एनीबॉडी। लेकिन काइंडली फिर ये रेज हैंड्स कुछ लोगों ने की है। मियां मोहम्मद यासीन जहूर, वुड यू लाइक टू कमेंट? सर देखे अनवर गनी साहब कोई होंगे इसमें, उससे रिक्वेस्ट कर दे अनवर गनी। हाँ, कुछ सीनियर लोग ऐसे हो ना कि दो जो मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को थोड़ा आगे ले जाए ना, थोड़ा मुझे एक जिसको रिलीफ भी मिल जाएगी। आपका एडमन बैठे, ही कैन गाइड अस, बिकॉज अगर वो अनवर गनी साहब को माशाल्लाह इंजीनियर साहबान 300 लोग हैं, तो थोड़ा उन Anwar, I couldn't reach to I don't know how. Anwar, we have Nurghani, are you with us? Anyone who would like to comment, he can request unmute and we can unmute him. Okay. Anyone who would like to comment, if some senior engineer is here in the house, we would love to have his comments. जिसने हाथ रेस किया है, मियां मोहम्मद यासीन, मियां मोहम्मद दानियाल, इंजीनियर जुबैर अहमद,
Masroor Ahmed, anybody of them who would like to comment? Please just अब्दुर्रहमान साहब, अगर वो चैट बॉक्स आपको नजर आ रहा है तो उनसे कहे अपना नाम लिख ले तो उनको हम अनम्यूट कर देंगे। ठीक है सर। एक्चुअली आई एम द स्क्रीन शो, तो वो फिर चैट बॉक्स की गायब हो जाता है। हमारा इल्म भी इतना ज्यादा इस पे नहीं है, गो कि मैं रेगुलर क्लासेस जूम पे ले रहा हूँ, लेकिन वो बहुत कम। डॉक्टर साहब के कहने का मकसद ये है, अगर कोई जो अभी तक प्रेजेंटेशन हुई है इसमें अगर कोई अपनी तरफ से या हमसे कोई कमी बेशी रह गई हो तो काइंडली अपना हिस्सा डाल दें और या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हाँ, अपना एक्सपीरियंस उसमें शो कर दे ताकि पार्टिसिपेंट भी उससे मुस्तफीद हो जाए और हम भी सुन ले। आई रिक्वेस्ट टू अनवर गनी साहब, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है PMU के, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो काइंडली उसको हम माइक दे देते हैं। अनवर गनी साहब प्लीज। Anwar Zaid is here, and I don't see Anwar Ghani. If he's logged in on a different name, I don't know, but we don't have Anwar Ghani Saab online. सर जी वो आपके शागिर्द भी है। चलिए जी, हम भी किसी के शागिर्द हैं और आजकल के शागिर्द माशाल्लाह उस्तादों से ज्यादा अहम हो जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं। तो अनवर गनी साहब, इफ यू आर हियर इन दी, काइंडली आप अगर नाम अपना कहे तो हम आपको अनम्यूट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम तो अनवर गनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में सर जी वो उठ गया है किसी काम से, ये क्योंकि वो प्रोजेक्ट के हवाले से एक मीटिंग भी चल रही है नीचे ना। चले, एनीवन एल्स? चलो आप कंटिन्यू कर ले सर जी। चले, अगर कोई नहीं है तो फिर हम अपनी बात को आगे ले जाते हैं। I wish we could have some comments because there are a good number of engineers online, 300 good. तो डिजाइन एंड बिल्ड की मैं बात कर रहा था कि इस वक्त दुनिया में मेगा प्रोजेक्ट्स या जनरली US में इस वक्त बाकायदा एक डिजाइन बिल्ड एसोसिएशन है, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी डिजाइन बिल्ड डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, जो इस वक्त यूज भी हो रहे हैं in some of the projects. But anyhow, इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो है ज़्यादा यूज हो रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जिसको हम जो है चैट में कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, हाउ टू मार्क अटेंडेंस, अच्छा ये तो खैर आपसे क्वेश्चंस हैं। I don't see any question relating to procurement. Anyone who would like to ask question can write in the chat box. Okay. Let us take one question from Mr. Engineer Siraj Ahmed. साहब ने question किया है, very small, a very fundamental question, that what is the difference between work plan and cash plan. As I already submitted, that work plan is your based on your activities and tasks which you would execute during different months and quarters of the year. For example, just taking an example of the building project, that for example you have been awarded a project by the Planning Commission PSDP project, in which I'll just take example of the boys hostel in Karakoram International University, जिसकी तकरीबन अप्रूव्ड कास्ट तकरीबन 200 मिलियन है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और इस साल उस प्रोजेक्ट में हमें तकरीबन 100 मिलियन एलोकेशन हुई है। तो आप क्लैश प्लान अभी हमने सबमिट किया, मैं आपसे किसी वक्त, आई एम सॉरी आई कुडंट अपलोड इट, तो हमने उसमें अगले 4 महीनों में, 4 क्वार्टर्स में, 12 महीनों में, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू द एंड ऑफ 30 जून 2021 हमने क्या क्या एक्टिविटीज इसमें करनी। ज़ाहिर है हमने एक कंसल्टेंट एंगेज करना है, हमने उसका डिज़ाइन, उससे पहले रिक्वायरमेंट री असेसमेंट करनी है, उसके बाद हमने डिज़ाइन करना है, उसके बाद हमने डिटेल
BOQs एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसके बाद हमने टेंडर इनवाइट करने हैं, फिर बिड इवैल्यूएशन करनी है, फिर जो है कंट्रैक्टर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये तमाम जो आपकी एक्टिविटीज एंड टास्क है, बेस्ड ऑन दैट यू डेवलप योर फिजिकल आउटपुट स्टेप्स, और वो जो स्टेप्स है उसकी बुनियाद पे आप फिर असेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल इन पहले 10 स्टेप्स के लिए अगर हमने पहले साल में ये 10 काम करने या 10 स्टेप लेने हैं तो इस पे हमारा क्या खर्चा आएगा, और उसके लिए फिर आप कैश प्लान बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा कि मैं पहले क्वार्टर में इसका डिजाइन, डिटेल डिजाइन और बिल ऑफ क्वांटिटीज और BOQ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट तक जाऊंगा, और सेकंड क्वार्टर मींस के जनवरी में जाके हम प्रोजेक्ट की टेंडरिंग वगैरह करेंगे, तो कैश प्लान में फिर आप दिखाएंगे कि जी आपको इस फर्स्ट क्वार्टर के लिए कितने पैसे चाहिए। आप कंसल्टेंट के लिए जो एलोकेशन है आपके जहन में क्या है, आपने PC1 में ऑलरेडी डाला है, और उसके बाद आपने अगर प्रोजेक्ट मैनेजर लेना है प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपकी PC1 में अप्रूव्ड है, वो उसकी सैलरी आ जाएगी, कुछ आपकी बाकी छोटे मोटे खर्चे जिसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, कंटिजेंसीज वगैरह शामिल, तो उसकी बुनियाद पे एक रैशनल, आगे मैं आपसे शेयर कर लूँगा कुछ एक्टिविटी जो हमारे टेम्पलेट्स प्लानिंग कमीशन ने बनाए हैं, उसको बुनियाद बनाते हुए देन यू गो विद द एस्टिमेट फॉर दोज एक्टिविटी
डॉक्टर साहब सर